हमें ये बताइए कि पाकिस्तान की इकॉनमी और जर्मन इकॉनमी में क्या फ़र्क है और हम पाकिस्तानी किस तरीके से अपनी इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं? Shazad, what you have just asked, it's not one question, it's a very complex situation now. Yes. And I personally, due to my personal experience, I look at the global economy and what is happening globally. Yeah. And when you do that, then you have to look at the people really who are controlling the money, who have the real power. And these people, it doesn't matter who's in power, whether it's Conservatives or Labour, like in the UK, we've just had the elections. And the truth is, the people who control the money, they control politics. So right now, what's happening in Pakistan, that's happening in Africa. I just had a call with Mali yesterday, and the same situation. I had a call last week with Ghana, same situation. And now the European economies are, sadly, they're going down. And when I first came to Germany, we had the D-Mark here, the Deutsche Mark. Yes. Literally normal working people were earning between 3,000 to 5,000 D-Marks a month. And the cost of living, percentual, was where you literally could have savings of 2,000 euros, D-Marks a month. Now, in this present situation, 2024, the average working person, if he saves 100 euros, that is a lot of money. So This is the difference. And I have a feeling worldwide, we have the same situation. You can go work, you can put food on your table, but that you actually have money to save, buy a house, buy a home, those conditions, they no longer exist. अजीम अली साहब, देखें आपने जो दो बातें जो मेजर प्रॉब्लम बताई है, मैं अपने नाज़रीन के लिए उर्दू में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। वो ये है कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स कंट्रोल वो लोग कर रहे हैं जिनके पास मनी का कंट्रोल है। चूँकि मनी का कंट्रोल है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है और वैल्यू ऑफ इनकम कम होती जा रही है। यही गाना में है, यही अफ्रीका में है, यही लेबनान में हुआ, यही करेंसी डिवैल्यूएशन तुर्की में भी हुई थी। अब पाकिस्तान में भी यही है कि जो मनी कंट्रोल कर रहा है वो सूदी ट्रांजैक्शन के थ्रू कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ इनकम नहीं बढ़ रही। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया अजीम अली साहब। मुझे ये बताएं कि सर ये मनी कंट्रोल पॉलिटिक्स कंट्रोल क्यों करते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं इसके पीछे? There are many reasons. Obviously, people who have power, who control money, they control politics. But the reality is, for my personal opinion, Shazad, we as humanity, we have to change. We have to change our focuses. When I just look at Pakistan as a country, it's so sad how much money Pakistan spends on the military. So if we just took a percentage of that money and put it into social needs, real needs, we could have a booming economy. And it's the same here now. Germany are spending so much on military. I don't know if you know the company Rhine Metal. They have just got I think 63 billion euro contract. All right. One thing very important over here, Azim Ali, that obviously this year our military budget is 2,000 billion rupees. And if we compare it in dollar term, 10 years ago, Pakistan's military budget was $10 billion, almost equal to. But now it is around $6 billion. It is shrinking due to currency devaluation. I agree with your point. कि पाकिस्तान का मिलिट्री बजट है। However, on the other side, if you see the budget of interest payment, compare it, officially the numbers are over 9,500 billion. Exactly. Right? इसमें देखें, मैं अब उर्दू में थोड़ा बताता हूँ कि हमारा जो मिलिट्री बजट था ना वो 2,000 अरब है, जो कि 5-6 बिलियन डॉलर करेंसी डिवैल्यूएशन के हिसाब से देखें। लेकिन आज से चंद साल पहले जब 80-90 रुपए का 100 रुपए का डॉलर था तो उस वक्त ये $10 बिलियन
बजट था, आज ये इन रियल टर्म कम होके $5-6 बिलियन रह गया। नंबर वन। नंबर टू, जो मनी कंट्रोल कर रहे हैं, जो पावर कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए देखें, एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो पाकिस्तानियों पे, अगर उसकी वैल्यू देखें तो वो आज 9,500 अरब रुपए है। 2,000 अरब मिलिट्री बजट, 9,500 इंटरेस्ट पेमेंट बजट। और अगर आप मुझसे पूछें एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट कि एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होगी साल एंड पे, वो है 12 से 13,000 अरब, क्योंकि 25% सूद पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानियों से कलेक्ट किया जा रहा है इन शेप ऑफ टैक्सेस। तो हमें दोनों तरफ है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट और मिलिट्री बजट, इसके बारे में आप प्लीज बताइएगा जरा। Shazad, you've raised the point of interest. So interest is a mechanism introduced into the banking system by the banking families. Yes. And if we literally mathematically look at interest, you can never recover or cover. Never mind recover. You can never cover the interest rates. Agreed. So one of the biggest things. I remember as a child, we bought our second house on a mortgage in the UK, and my parents did not realize what this meant, how much interest we were paying on the house. Yes. My parents, being strict Muslims, when they realized in what situation they had signed the mortgage contracts, my mother collected money from relatives. We got money from Pakistan at that time, and we paid off that mortgage in 2 weeks. Why? Because they still had the faith of Islam in their hearts. So now nobody cares. Nobody cares. So and this is the difference now. The people have the diluted values. They accept interest. We look at Pakistan. What was it? It's named as an Islamic country, but we have the same banking systems like in New York. So how this is where the conflict starts. You know, on the one hand, we claim to be Islamic Muslims. On the other hand, what are we? We are slaves to the interest. हाँ, हम गुलाम हैं सूद के। आज़ीम अली साहब, आपने ये वो स्टेटमेंट दी है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मैंने फर्स्ट टाइम कि हम सूद के गुलाम बने हुए हैं। मैं कहा करता था कि सूदी सिस्टम के गुलाम है, लेकिन आपने सूद का गुलाम बना दिया कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं। हम अल्लाह की पूजा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम सूद को खुदा बना के बैठे हुए हैं। That is the biggest evil in the world. Yes, that is the biggest evil in the world. I agree on that कि ये सबसे बड़ी बुराई है। अजीम अली साहब, मुझे बताएं, हम इससे निकल सकते हैं क्या? क्या जर्मनी भी सूद में फंसा हुआ है, क्या पाकिस्तान की तरह? That made myself very unpopular, what I'm going to say now. Yeah. The Germany is blamed for the 2 world wars. Yes. Okay. Yes. The Second World War was blamed on this evil man called Adolf Hitler. But actually, he was the first European politician to actually eliminate interest. Yes. That was one of the first things he did. Okay. Can you imagine that? Yes. So, yes. I can go a little bit more into this history. And the sad part is now the average German, he is so brainwashed to believing Adolf Hitler was an evil man. But he did so much for the German economy. 1939 में एक सूदी ट्रांजैक्शन के ऊपर काम हो रहा था, आज भी हम सूद में फंसे हुए हैं। क्या बात कर रहे थे आप? Basically, I was trying to, I explained to you earlier on, the Second World War, when it started, was due to the fact that Adolf Hitler and his government, the socialist government, they actually got rid of the interest. Yes. So, and this is why the German economy at that time boomed. He promised everybody jobs. So, and the solution there was they did not use money. They used labor tokens. Okay. So if I was a carpenter, I worked 8 hours. For those 8 hours, I got 8 tokens, a certain value.
Okay. Not using the banks, they were using their labor. A barter system was introduced. All right. So this is a solution if we really want it. Yes. So what I wanted to say now, the situation it is as it is. So now we are living in times, in digital times with artificial intelligence, Yes. Shazad. So the solution has to be global because the interest banking system is global. हम नाजरीन अज़ीम अली साहब ने बताया कि हिटलर के दौर में जब सूद को ख़त्म किया गया, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग अज़ीम अली साहब, जब सूद को ख़त्म किया गया उस वक़्त उन्होंने एक टोकन सिस्टम क्रिएट किया कि अगर कोई मज़दूर काम कर रहा है तो उसको टोकन दिया जाएगा, अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है उसको टोकन पे करेगा। तो इस तरीके से एक ऐसी पैरेलल बैंकिंग सिस्टम का इनेकाद किया गया जिसमें कि जो कि फ़िज़िकल था, टोकन बेस्ड था, जहाँ पे सूद पे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज भी हमें कोई ऐसा एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करना है दैट शुड बी ग्लोबल। पहले तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो लोकली, लेकिन फिर उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी भी हो, क्योंकि अगर मैं मज़दूर हूँ, मैं जहाँ काम करने गया हूँ, मुझे वहाँ से टोकन मिल जाए, या मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एप्लीकेशन है, मेरे अकाउंट में इतने क्रेडिट आ जाएं कि मैं इतने क्रेडिट खर्च कर सकता हूँ, इतना पैसा, इतनी आर्टिफिशियल मनी जो भी इसको कह दें, वो टोकन खर्च करूँगा तो कोई ना कोई चीज़ लूँगा। इस तरह इकॉनमी बूस्ट करना शुरू कर देती है। जी अज़ीम अली साहब, am I correct? Perfect, Shazad. Very good explanation. And I want to take this one step further. Sure. And I don't know the legal situation in Pakistan, but here in the Western world, you must be fully aware, you're an economist, the blockchain technologies. Yes. So this is something me and you, we've had discussions. So you have this, we have the technology to move away from the interest. Yes. Can you explain that? Of course, in blockchain, all the transactions, as you know, you're fully aware of this. For me, two things. First of all, this fear of not having enough. I'll give you a prime example. If we look at a fruit tree, a mature fruit tree, there has been long-term research that the more different animals eat that fruit, say in the middle of the African jungle, the elephant eats, the giraffe eats, the monkeys eat, the deer eat, the following year, that tree will produce more fruit. Okay. That is the secret, the godly secret. Nature is abundance. All right. Do you remember as a child, first time I came to Pakistan as a 10-year-old, okay, we would the orange plantation. Yes. And the oranges till you was full. It would be a meal just eating oranges. Yes. Because it was the season, it was abundance. Yes. So this mental scarcity, what they have managed to program us with, that's not true. Let me explain now to my नाज़रीन in Urdu. नाज़रीन, अज़ीम अली साहब ने अपनी रिसर्च की बेस पे जो अभी बात की है ना, दैट इज़ आल्सो इंक्रीज़ इन माय नॉलेज। उन्होंने कहा कि जो जंगल में जो ज़राफ़ा, जो हाथी, ये जो जानवर की जो खुराक है, वो जितनी खुराक वो खाएंगे अगले साल वही दरख्त ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि जब जितना ज़्यादा कोई खाएगा, जहाँ से जो खाया गया उसको ज़्यादा फल लगता है। जिस दरख्त से जितना ज़्यादा फल खाया जाएगा, नेचर जितना ज़्यादा बेनिफिट उठाएगी, अगले साल उसको उससे ज़्यादा पत्ते लगते हैं, ज़्यादा फल लगते हैं, ज़्यादा फल अवेलेबल होता है खाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला के जो कवानीन हैं उसमें ये कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हम दूसरों को बेनिफिट देंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट बढ़ेगा। जी, ओवर टू यू अज़ीम अली साहब। So just on the basis of that, Shazad, and what I'm trying to share with you, sure, and with your audience,
we do not lack anything. If we have faith, the universe is full of abundance. You know, when we look at social media, you have one or two millionaires showing off their Ferraris and God knows what. The reality is, in the utopian world, the real world, in the godly world, we as human beings, you know, we talk when you the descriptions of heaven, or you know, you reach out and you will have a mango in your hand. Yes. That is possible here, Shazad. एग्री 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 एग्री। अब देखें So अजीम अली साहब, आपने दो बातें और बताई कि ख़र्च करने से रिज़्क बढ़ेगा, जितना दरख्त बेनिफिट देगा एक जानवर को जिसने वहाँ से खाना है उतना बढ़ेगा, उतना अल्लाह रिज़्क बढ़ाएगा। तो जो दूसरी बात आपने की है कि अबंडेंस, जो अल्लाह ताला के रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंस में अवेलेबल हैं। ये हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के कवानीन को फॉलो करते हुए अपने रिज़्क में भी बरकत लाएं और इकॉनमी में बरकत लाएं, वहाँ कमी कोई नहीं है। definitely not, Shazad. Definitely not. And this is where it gets really beautiful. Now, with the digital world, we can have any solution. We have fantastic programmers in Pakistan. Why do you think it is forbidden in certain countries? Because that is a threat to current banking system. Exactly. It's nothing to do with the moral question. It's physical. It's a physical problem because they see a solution and they don't want that solution. Yes. एंड इसमें जो ख़राबियाँ भी हैं, एक ख़राबी यही है कि इसको अगर हम खुद ही, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में मसला होता है कि हम अपने एक शेयर को खुद ही प्राइस को ऊपर करना शुरू कर देते हैं, इसमें सिर्फ ये एक ड्रॉबैक है कि जो प्राइस सट्टाबाजी जिसे कहते हैं या जिसे क्या कहते हैं, गैम्बलिंग टाइप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ये इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द पीपल हु हैज़ control on this blockchain, whatever you call it. What companies like BlackRock are doing. They have such powerful AI computers. They can dictate the price of corn in Pakistan, or they can dictate the price of corn in Ukraine. Yes. So you have a computer playing with the figures, mathematical figures, and that's how the wealth gets sucked in. Okay. अब इसमें पाकिस्तान में अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अडॉप्ट करना चाहे तो इस वक्त हमारे पास 2-3 ऑप्शन आए हैं, जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश, एक और आया हुआ है पता नहीं क्या नाम है उसका, कि वो भी, लेकिन दैट इज़ लिंक्ड विद बैंकिंग सिस्टम फॉर दैट पर्पस। But that's the difference. If you use the blockchain technology, that is independent of the banks. Yes. Germany has actually banned Bitcoin. Okay. All right. I wonder why. Azim Ali, let's come back to the main point कि पाकिस्तान को within the current existing system structural reform किए बगैर अभी हम सोच रहे हैं जी हम प्राइवेटाइजेशन कर दें, हम बाहर से लोन ले लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आएँ, इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगा दें, डिस्पाइट कि इंडस्ट्रियल खुश नहीं है, और हम चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से जो यूएई में दोस्त बैठे हैं, सऊदीया में दोस्त बैठे हुए हैं, वो हमें कुछ ना कुछ देते जाएं ताकि हमारी सर्वाइवल चलती रहे। और प्राइवेटाइजेशन को तो फोकस किए बैठे हुए हैं कि अपने एसेट बेच दें, पोर्ट बेच दें, एयरलाइन बेच दें, स्टील मिल बेच दें, पीटीसीएल तो बेच ही दी औने पौने। ये अब इसके ऊपर हमें आपकी माहिराना राय चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, या एज पर जर्मनी उन्होंने क्या गलतियां की थी, प्राइवेटाइजेशन में क्या गलतियां की थी और बैंकिंग सिस्टम में क्या गलतियां कर रहे हैं? Shazad, I can reflect back as a child in Leeds, Yorkshire. At that time, the English or the European industry was based on coal-fueled power plants. Yes. And at that time, we had the coal miners were on strike for over a year and a half. I remember we collected money for the miners because families could not put food on their table. Okay. So what happened at that time, the miners, they were fighting for a fair wage. And what happened, the first female Prime Minister of the UK, Margaret Thatcher, yes. Do you remember? Yeah, I remember. Yeah, so what happened, what did she do?
she sent in the military. She used the army to kill the unions. Okay. So what happened there? That was the real fight, for the working man, for a fair wage. We had the unions, Yes. and the unions were the ones who got people a fair wage. They could live, they could raise a family, buy a home. So when you use the military to kill one instrument, what the working man had, Yes. that was the start of privatization. Yes. And who was used? The military. Okay. So who runs Pakistan? Mm-hmm. So what I want to say now, we have what you just mentioned, the privatization. Yes. When you look at Pakistan as a entity, we the taxpayer, we pay for the railroads, we pay for the port, we pay for the motorways. But what happens? These private companies, they get funding from the government, 50-50, for example. Yes. But afterwards, who collects the toll money? The private company collects the toll money from the private person. Yes. The government, they don't get a penny. So from day one, sadly, the Pakistan country has been privatized. आज के प्रोग्राम में हमने कंपेयर किया है जर्मन इकॉनमी, यूके इकॉनमी, पाकिस्तान इकॉनमी और किस तरीके से हम अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।